So, hello everyone, welcome back to another live stream. कल वाला हमारा ट्रेड was not that good. लास्ट दो स्ट्रीम्स में हमारे दो एसएल गए हैं. इस स्ट्रीम में let's try to recover it. Let's see if we can make any money or not. तो जो existing analysis है उसको clear करते हैं. And as usual, we'll start from beginning. 4 hour time frame से start करते हैं. So this is a gold chart. We are looking at the gold chart. Now we'll clear all the drawings. आज काफ़ी strong buying आई है वैसे gold में. When I last saw, gold इस पॉइंट पे था. मोर देन 1000 पिप मूव आया है गोल्ड में, विच इज़ इनसेन. लाइक यूजुअली इतने बड़े मूव्स नहीं आते हैं. देयर मस्ट बी सम न्यूज़ इवेंट और एनी जियोपॉलिटिकल रीजन. अदरवाइज मूव्स लाइक this on gold is not that usual. So right now it's on this resistance. It's been tested 3 times और यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है. So now we can expect कि थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है. Yeah, it will continue moving down. So there are these two probabilities. Considering that will mark our zone, make our zones more refined. So this is the resistance. But next time अगर इस पॉइंट पे आता है तो there is very high chances कि इसको ब्रेक देके ये पूरा ट्रेंड लाइन का मूव कवर कर लेगा very easily. Just keep an eye on gold. So many opportunities in the market. आज फ्राइडे है, वीक क्लोजिंग है, तो विल सी अगर 1:2 या 1:3 कोई सेटअप मिलता है तो विल टेक एंट्री, अदरवाइज विल जस्ट क्लोज द वीक. आज वैसे काफ़ी बड़े बड़े मूव्स आए मार्केट में. तो अगर हम न्यूयॉर्क सेशन की स्टार्टिंग में लाइव आते तो देयर वर चांसेस के अच्छे ट्रेड्स मिल जाते. सो ये वी कैन सी कि यहाँ पे ब्रेक दिया प्राइस ने. एंड ये मूवी मेरे हिसाब से अराउंड 1000 तो नहीं, 100 पिप्स का होगा वेरी इजीली. 62 252 या लाइक आई सेड 100 पे मूव था. अभी क्या प्राइस ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है. तो ये जो छोटे छोटे मूव्स है, ये दो कैंडल, इसमें भी अराउंड 130 पिप्स कवर हो रही है. तो जब प्राइस इतना सही मोमेंटम देता है उसके बाद में जो स्टॉप लॉस है और रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी बड़ा हो जाता है, राइट? सो इफ़ यू आर नॉट यूज टू दीज मार्केट कंडीशंस, जस्ट डोंट टेक एनी एंट्रीज. So here we can see that it's forming a trend line structure. इस ब्रेक पे भी एंट्री हुई होती तो इट्स ऑलरेडी अराउंड 80 पिप्स. So on 4 hour time frame, it's bullish, trying to sustain. On 1 hour, it's still bullish क्योंकि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो ये फॉर्म कर रहा है. इधर भी इट्स लुकिंग मोर ऑफ दैट स्ट्रक्चर. तो आई फील कि बाइंग साइड में ही अगर ट्रेड देखते हैं तो वो सही रहेगा. बट अगर लोअर टाइम फ्रेम में कोई छोटी एंट्री मिल रही है तो उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें सिर्फ 1-2 घंटे में ट्राई करना है कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए. दैट्स ऑल. बड़े टारगेट्स नहीं चाहिए. वी जस्ट नीड 1:1 1:2. दैट्स इट. यहाँ पे ब्रेक आया ट्रेंड लाइन का ऑन दिस सपोर्ट एरिया. प्राइस इसको रीटेस्ट करने का ट्राई कर रहा है. Gave a break of the structure, retested once, gave a good move. Now it's retesting one more time. GBP, GBP पे we can find
जीबीपी में भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम थी आज. ये पूरा आज का मूव है. More than 100 pips, 100 200 pips. So GBP has already given a good move today. यहाँ पे it took support from this level. So this is a resistance zone. This is a zone. GBP ने इसको 2 से 3 बार रिस्पेक्ट किया है. 1 2 3 4 5. So it's tested 5 times, right? You can see break of trend line. Amazing, amazing setup. Break of trend line, gave a pullback, and boom. And like picture perfect setup है ये तो. यहाँ पे took support from this resistance zone. Fair value gap, order block. These thing works, right? अगर इन चीज़ों को भी आप ढंग से यूज़ करना सीख जाते हैं तो ये काफ़ी सही वर्क करता है मार्केट में. ये मूव भी अराउंड 20 पिप्स का था. एक लॉट के साथ भी एंट्री हुई होती तो स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है इधर. स्टॉप लॉस अराउंड 12 15 पिप का था. और तो 1:1 का ट्रेड था ये, अगर ये इतना सा मूव भी कैप्चर किया होता तो. सो करंटली वी एक्सपेक्टिंग कि ये पूरा ट्रेंड लाइन का मूव कवर हो. तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट कर रहा है जीबीपी. अगेन वेरी वीक सेलिंग. So we can consider this trade as a buying setup on Fibonacci. Let's see कौन से लेवल पे है. अगर यहाँ से देखते हैं तो इट्स अराउंड 1.3 लेवल पे. और अगर इधर से देखते हैं तो इट्स ऑन 0.5. लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस अगर आप लोग भी फिबोनाची यूज़ करते हो तो. इवन तो मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, सिर्फ ट्रेंड की स्ट्रेंथ देखने के लिए चेक करता हूँ कभी कभी. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट यूज़ फिबोनाची. प्योरली टेक्निकल्स पे रिलाई करता हूँ मैं. सो हियर वी कैन सी अगर ये एंट्री ली होती तो इट्स ऑलरेडी गिविंग अ गुड मूव. बट we cannot catch all the fish together. So it's already more than 1 is to 5, 1 is to 1.5, 1 is to 2 done. Crazy, crazy move, crazy move. अगर ये एंट्री ली होती तो you were in you would be in good profits. So this trade has given around 1.1 is to 3 in just 3 minutes. Around 100 per move. This was a great setup, but I didn't saw this coming. So maybe from this point, price can take a small pullback and continue this trend.
as we haven't seen selling since morning. So there are chances कि प्राइस यहाँ तक आ जाए इस ऑर्डर ब्लॉक को और फेयर वैल्यू कैप को पूरा कंप्लीट करे, उसके बाद में आगे का मूव थे. ज़्यादा चांसेस तो सेलिंग की ही है, बट लेट्स सी. सो अगर हमें एक और पुल बैक मिलता है तो वी माइट टेक सेल एंट्री. एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिले देन वी विल कंसिडर दैट, क्योंकि टारगेट स्टिल काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं. अराउंड 120 pips वी कैन एक्सपेक्ट. So we'll avoid this GBP trade as of now, क्योंकि इस ट्रेड में काफ़ी कम कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को, क्योंकि जब इतनी लंबी ट्रेंड लाइन होती है, अगर इतना होता तो देर वर चांसेस कि प्राइस को पूरा कंप्लीट कर दे. स्टिल देर आर चांसेस कि ये ट्रेड भी हो सकता है एग्जीक्यूट. अगर यहाँ पे भी एंट्री ले तो भी स्टॉप लॉस इज़ वेरी फक्ड. इट्स नॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो वी हैव टू टेक टारगेट ऑफ एटलीस्ट दिस पॉइंट, एंड इट्स 10 pip target. So we are risking around 4 pips to make 10 pips. So not that bad, but I feel it has very low probability of working. We'll look for selling opportunities. गोल्ड में हमारी एंट्री अराउंड दिस पॉइंट होगी. Even though the buying here is looking strong, it might be considerable for an entry, but I would avoid this setup. क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग आई है ना, it was very strong. It wasn't a small pullback. This selling was pretty strong, right? So there are very high probability. There's very high probability कि यहाँ से price इस level तक भी आ सकता है काफ़ी easily. So we'll look for selling opportunities only as of now. On 5 minute it has broken the structure. यहाँ पे भी we can enter, but the thing is एक pull back आएगा और stop loss लेके then it will give our target. So we have to focus on making more precise entries. It should be extremely precise, or at least logical to you. यहाँ पे ना ही कोई प्रॉपर एसएल है, राइट. एक स्पाइक जो एसएल इज गॉन. या ये भी हो सकता है कि यहाँ से लिक्विडिटी ली है प्राइस ने एंड नाउ इट्स गोइंग टू गो अप. एनीथिंग एनीथिंग कैन हैपन. गोल्ड में यहाँ पे हम सेट कर देते हैं हमारा रिमाइंडर. अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो विल कंसिडर सेलिंग, और यहाँ पे विल कंसिडर अराउंड दिस पॉइंट. So I'm not interested in buying trade in both of these instruments. I will only prefer selling as of now, क्योंकि बाइंग हो चुकी है जितनी होनी थी आज की. सुबह से सिर्फ बाइंग 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 बाइंग. सेलिंग इज मिसिंग.
सेलिंग आई भी है तो भी काफ़ी काफ़ी वीक थी. So price is on our level. Now we'll take an entry. So we are in this trade. Stop losses of 20, 24 pips. You can wait once price break the structure, then you can consider for entry. But I have entered. Volume is looking very strong. इस कैंडल की क्लोजिंग बताएगी कि प्राइस क्या करने वाला है. So this is our entry 56 and this is going to be our stop loss. Let's aim for this target. 52 का हमारी एंट्री हुई. एटलीस्ट 100 पिप्स का टारगेट करते हैं. And if it starts working, we'll add more positions. System stop loss डाल के रखो क्योंकि there are chances कि spike आ सकता है. So our second entry will be around this level. जैसे ही price ये structure break करता है, we'll add one more position. GBP is still trying to sustain. On this support area, it's inviting buyers. क्योंकि अगर ऊपर जाना होता तो यहीं से जाता. It can take RSL. There are very high chances. But we'll enter again अगर ये हमारे इस level पे आता है तो. So RSL is gone. We'll take another entry अगर ये इस level पे आता है तो. Even though most of the times gold ऐसे zones को नहीं respect करता अगर selling देनी होती है strong. But here we can see कि यहाँ पे थोड़ा consolidate किया. Complete manipulation. यहाँ पे liquidity grab and then it's going up. यहाँ पे अगर ये move continue होता है तो we'll avoid this setup. पर अगर वापस इस black line के पास में आता है तो we'll consider that again.
In GBP as well, we can see very slow buying. It's very slow. Very small green candles. It's not showing any strength in buying. हमारा व्यू अभी भी सेलिंग का ही है. अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो first target is going to be this 47. It's around 15-20 pips. Decent target. Let's see what BTC is doing. It's been a while since I saw this. It's very bearish from last 3-4 days. Here we can see BTC is going to touch this zone very easily. Maybe in next 3-4 days. It respects order block very beautifully. Very beautifully. Like when price touched this order block, it gave a very good move. Around 1000 pips, which is insane. Second time when it touched this order block, again, extremely good move. So in BTC, we can rely on these things. Here as well. Mainly 1 hour order block works the best. 15 minute वाले उससे थोड़ा सा कम. Like here as well. यहाँ पे price can continue this move. Let's backtest 15 minute order blocks. अभी recent का ही देखते हैं. So this was the order block. यहाँ पे price आया, touch किया and not really touch नहीं किया. Still gave up move यहाँ से. Then this. Then this order block. Gave a really good move. And the reason is order block को touch किया. It was making a trend line structure. So gave a break of the structure. And yeah, easy target. Gave a move around 90 pips, which is pretty good in BTC. You just have to follow the trend, take entries on pullbacks. And yeah, trading BTC is not that complicated. So gold is on or our entry level once again. So we'll take entry this time and with a decent position. So I'm entered in this trade. Stop loss will be around this high. So 30-40 pips SL. And target, like I said earlier, around 120 pips. So this is going to be our target. 55.47. This is our stop loss. And again, once price break the structure, we'll add a bit more positions, small quantities.
590. So let's wait how price is going to play out. It might take some time. It might consolidate here for a while. Mm. But once price start giving this break, we can expect decent targets. So this is going to be our first target. Like we'll book most of the positions here and let the remaining run. We only have few hours until the market close. So again, this is trying to sustain. If this gives ISL, we'll just exit the trades. We'll exit this week. Right, we are not going to take any more entries. That's not our day. That's it. हमेशा अपने एसएल पे थोड़ा सा लीनियंसी रखनी चाहिए. थोड़ा ट्रेड को ब्रीथ करने दो, राइट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारा सेटअप सही होता है, ट्रेड लॉजिक सब सही होता है, बट स्प्रेड की वजह से स्टॉप लॉस चला जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एसएल के पास ब्रीथ करने की जगह है. इट्स पार्ट ऑफ द गेम. यू डोंट हैव टू टेक थिंग्स पर्सनली. अगर स्टॉप लॉस आता है, टारगेट आता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम. हमारी एंट्री होनी चाहिए थी अराउंड दिस ट्रेंड लाइन जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे लाइव स्ट्रीम की स्टार्टिंग पे, राइट? यहाँ पे हमें एंटर करना चाहिए था बट नहीं किया, तो इस वजह से ये सब वी आर फेसिंग. इट्स कम्प्लीटली फाइन. अगर एसएल भी आता है तो कम्प्लीटली फाइन.
So we are out officially. One more time. And GBP has also given break of this level. So it's up around four pips. India Gold has also sustained this move. So this was it. We'll close this week for this SL. We took around 3 SLs this week. But yeah, it's part of the game. We don't have to be harsh or lose our hopes. We just have to follow the process and just keep trying. We gave 2 chances to the setup. No, we are not going to give more chances. Still, there are chances it will try to go up, consolidate here for a while, and then give this move. But we are not interested anymore in the setup. See you in the next stream.